جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ جامعہ کا یونیورسٹی کا شعبہ تعلیم و تربیت ایک بڑا وسیع شعبہ ہے، جس شعبے کے تحت طلباء کی تربیت کے سلسلے میں مختلف لیکچرز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی ایسے بہت توسیع خطبے اور لیکچرر کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا، جس سے آپ لوگ استفادہ کرتے آ رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہمارے درمیان میں ہمارے معزز مخاطب جناب قاضی سراج صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ اپنے خیالات سے ہم سب کو نوازیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے، قاضی سراج اظہر صاحب یہ کلینکل ایسوسیٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی کے، تو وہ ہمارے درمیان پہنچ چکے ہیں۔ جو ہمارے انتظامی عہدیدار ہیں وہ بھی کچھ لمحے میں پہنچ جائیں گے۔ آپ حضرات کو زیادہ انتظار کی زحمت نہ دیتے ہوئے میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں معاملہ قرآن تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے، تو میں قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا، اس کے لیے میں تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے ایم ایڈ کے اسٹوڈنٹ محمد نعمت علی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کے تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ محمد نعمت علی۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائے۔ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم نے ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائے، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے اس کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو جن عورت کے گھر وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اور دروازے بند کر کے کہنے لگے یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا اللہ پناہ میں رکھیں، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہے، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ شکریہ۔ یہ تھے محمد نعمت علی جو تلاوت قرآن اور اس کے ترجمے کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اہل منطق سر و سجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جب فلسفے قرآن کو۔ تو میں اب اس کے بعد IMC کی ٹیم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جامعہ کے ترانے کو پیش کریں۔ یہ جامعہ زبان اردو، یہ جامعہ زبان اردو، زبان اردو کا آشیاں ہے، زبان اردو کا آشیاں ہے۔ یہ جامعہ زبان اردو، یہ جامعہ زبان اردو، کلام سارے ہے درج روح میں، قلم سے اترا ہوا بدن ہے، یہ علم کا شہر گھر ہے میرا، میرا مدرسہ میرا وطن ہے۔ تعلیم کا موسم تہذیب کی فصلیں ہیں، ہم روشنی کرتے سورج کی نسلیں ہیں۔ اردو کی اڑے خوشبو، یہ جامعہ زبان اردو، یہ جامعہ زبان اردو، یہ جامعہ زبان اردو۔ جو دانا گزرے تھے اس زمین سے، جو دانا گزرے تھے اس زمین سے، وہ علم کے بیج بو گئے ہیں، بڑے ہوئے جب پودے بڑھ کے ہمارے قد اونچے ہو گئے ہیں۔ ہم چاند کی پیشانی جب چھو کے نکلتے ہیں، کائنات میں ہے پاؤں اور مارس پہ چلتے ہیں۔ اردو کی اڑے خوشبو، یہ جامعہ زبان اردو، 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 یہ جامعہ زبان
अभी आप जामे के तराने से महसूस हो रहे थे। मैं अब हमारे एक्सटेंशन लेक्चर के मुखर्रिर उनका तारुफ पेश करने के लिए मैं डॉक्टर शमशाद बेगम को दावत सुखन देता हूँ कि वो आके हमारे स्पीकर साहब का तारुफ पेश करें। शुक्रिया फरहत अली साहब। आज की इस इजलास में मेहमान मुखर्रर काजी अजहर साहब जो तालीम माहिरीन भी हैं और माहिर इमराजियात भी हैं। ही इज़ वर्ल्ड renowned educationist and a clinical pathologist at the same time. We have very few people with such great caliber, but personality of a normal person who wants to extend his knowledge and his understanding. And in this technological era, he wants to update the education system through his knowledge of science, medicine, and education. Doctor, today I shall produce, we have seen him many times in this university, Maulana Azad National Urdu University, but every time we see his visit or when he visits the university is always new for us, and working at this age with such zeal, all of us surely must be inspired. So I would just like to present a profile in a brief profile of his. So Dr. Qazi Siraj has Azhar. His qualifications are BSc, B.Ed, MBBS, MD, FCAP, Fellow of Academic FASCP, and American Pathological Institution or Organization. Now, Associate Clinical Professor, Michigan State University, Lansing, Michigan. Vice Chief of Staff, Hurley Medical Center, Michigan State, USA. President, Genesee County Medical Society, Michigan State, USA. He has been a chairman, Scientific Review Committee, Flint Regional Science Fair, Michigan State, USA. Director and Clinical Advisor, Baker College, also Michigan State, USA. Director, Digestive Diseases and Nutrition Center, Burton, Michigan State, USA. Vice Chairman, Department of Pathology, Hurley Medical Center, Michigan State, USA. Mastering others is strength, but mastering yourself is true power. So Dr. Qazi Siraj Azhar Sahab, he is really showing the world the power of oneself. So his mastery over himself is true power. So we all shall cherish his lecture. So always interested in the field of education, even after acquiring degrees in medicine, he is one of the handfuls in this world who has qualifications both in medicine as well as in education. Being associated with medicine, he took special interest in neuroscience and brain-based education. He keeps himself abreast with modern research-based methodologies in teaching and learning. He is a member of National Science Teachers Association and Association of Supervision and Curriculum Development. He is a founding member and secretary, Genesee Academy, Flint, Michigan, USA. He is a chairman of Scientific Research Committee, Flint Regional Science Fair, Michigan, USA, author of a book, A Guide to the Science and Engineering Fair, author of a lesson in 8th grade biology book of Andhra Pradesh and Telangana, How Science Works or How Scientists Work, lessons in 4th grade science book published by MFERD, Millet Foundation for Research in Education and Development. He has conducted seminars, workshops for Council of Science and Technology, State of Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He has conducted seminars, workshops for SCRT, Telangana and Andhra Pradesh. He has been a founder of Regional Science Fair, Hyderabad, and founder of National Science Fair, Chennai. He has written numerous English and Urdu articles about modern methodologies of teaching and learning and importance of scientific investigation, conducted national, international level seminars on science of learning, science of teaching, and science of scientific investigation. He has conducted CME workshop for pathologists
and postgraduate students in the Department of Pathology in various medical colleges all over the world, all over India, involved in teaching brain-based education, science of learning and teaching, hands-on inquiry-based methodology, research-based techniques, and science of scientific investigation. This is for you, sir. Your feet will bring you where your heart is. So, sir comes again and again to India to enlighten his knowledge and share with it. And today, on behalf of Maulana Azhar National Urdu University and Dean Professor Siddiqui Sahab, HOD, our HOD Professor Mushahid Sahab, Najma Begum, Associate Professor, and our Registrar, I would like to invite you all into this, dear colleagues and all my dear students. Wish you all a very good, enjoyable session into this. Thank you. हमारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब अपनी गुनागो मसरूफियत के बावजूद हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी है। जोरदार तालियों के साथ उनका खैर मकदम करते। अब मैं गुजारिश करता हूं कि रजिस्ट्रार साहब हमारे मेहमान मुकर्रिर की बुके पेश करें और शाल पोशें। अब मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे डीन ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन और OSD2 हमारे रजिस्ट्रार साहब को गुलपोशी जोरदार तालियों के साथ अब मैं डीन ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन और OSD2 को इस बात की दावत देता हूं पर मौजूद हमारी यूनिवर्सिटी के इंतहाई कारकर्द और काबिल एहतराम रजिस्ट्रार प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब, आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर क़ाज़ी सिराज साहब, जो मिशिगन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं पैथोलॉजिकल लैब के, हमारे सदर शोबे तालीम और तरबियत प्रोफेसर मोहम्मद मुशाहिद साहब, इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नजमा बेगम साहिबा, इस प्रोग्राम के रूह रवां डॉक्टर फरहत अली साहब, यहाँ पर मौजूद सभी लायक़ सद एहतराम असातिज़ा इकराम, तेलंगाना साइंस एकेडमी के सभी ज़िम्मेदारान और हमारे रिसर्च स्कॉलर्स और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बहुत ही अहम मौजू पर इस एक्सटेंशन लेक्चर का इनेकाद अमल में आ रहा है। आप जानते हैं कि इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी एंड रोल ऑफ टीचर्स, ये आज की गुफ्तगू का महवर है। मौसर तदरीसी हिकमत अमली और असातिज़ा का किरदार, इस मौजू पर खिताब करने के लिए हमने मिशिगन यूनिवर्सिटी अमेरिका के डॉक्टर काजी सिराज अजहर साहब से दरख्वास्त की। उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया, यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं एक बार फिर
آپ تمام کی جانب سے ان کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ عنوان کو متعارف کروانے کے لیے میں وہ باتیں کروں گا جن میں سے بہت ساری باتیں آپ نے شاید سنی ہو، لیکن ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سر، ہمارے بی ایڈ کے اور ایم ایڈ کے طلباء باضابطگی سے اپنے سلیبس کے حساب سے ہی بات پڑھتے ہیں کہ تدریس ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تدریس صرف آرٹ ہی نہیں ہے بلکہ ایک سائنس بھی ہے، اور اس کی چند بنیادی باتیں ایسی ہیں کہ جو سکھائی جا سکتی ہیں، اور مشق کے ذریعے سے، اپنی ذاتی دلچسپی کے ذریعے سے اس فن میں مہارت پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس لحاظ سے وہ آرٹ ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آرٹس تو بہت سارے ہیں، شاعری ایک فن ہے، مصوری ایک فن ہے، سنگ تراشی ایک فن ہے، بہت سارے فنون ہیں، لیکن تدریس ایک فن ہونے کے باوجود بھی بہت مخصوص ہے، سب سے ہٹ کر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کو اگر میں مثال کے ذریعے سے ظاہر کرنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ مان لیجئے کہ میں اس کھڑکی میں سے باہر دیکھتا ہوں اور ایک بہت خوبصورت منظر میرے سامنے ہوتا ہے، ایک ایسا حسین منظر کہ جس کو دیکھ کر اس میں ڈوب جانے کو طبیعت چاہتی ہے، لیکن اگر میں ایک عام انسان ہوں تو طبیعت متاثر تو ضرور ہوگی، لیکن میرا تاثر کیا ہوگا؟ اگر میں اردو کا شیدائی ہوں تو میں کہوں گا سبحان اللہ، واہ کیا خوبصورت منظر ہے، بات ختم ہو گئی۔ اگر میں انگریزی کا شیدائی ہوں تو میں کہوں گا واو واٹ اے بیوٹیفل سین اٹ از، اینڈ دیٹس آل۔ لیکن اگر میری جگہ پر، میں ایک عام آدمی ہوں، میری جگہ پر ایک شاعر وہاں کھڑا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایک نظم کے بغیر تو بات بنے گی نہیں۔ جب تک کہ اس خوبصورت منظر کو اپنی شاعری کے ڈھانچے میں وہ ڈھال نہ دے، اس وقت تک حضرت شاعر کو رات میں نیند نہیں آنے والی ہے۔ اگر مصور کھڑا ہو جائے تو جب تک اس منظر کو ایک تصویر کی شکل نہ دے دے، مصور کو اطمینان نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ یہی حال کسی بھی دوسرے فنکار کا ہے۔ اب استاد بھی ایک فنکار ہے، لیکن فرق کہاں آ جاتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ شاعر اپنے فن کا مظاہرہ جس مٹیریل پر کرتا ہے وہ ایک کاغذ ہے، مصور اپنے فن کا اظہار جہاں کرتا ہے اس کا مٹیریل یا تو بورڈ ہے، دیوار ہے، کپڑا ہے یا کاغذ ہے، لیکن استاد اپنے فن کا مظاہرہ جہاں کرتا ہے وہ مٹیریل کون ہے؟ وہ ہے شاگرد، وہ ہے طالب علم۔ اور کیا فرق ہے باقی مٹیریل میں اور استاد کے مٹیریل میں؟ شاعر کا مٹیریل کاغذ بے جان، مصور کا مٹیریل دیوار بے جان، لیکن استاد کا مٹیریل طالب علم، جاندار، شاندار، ایک سوچتے ذہن کا مالک، ایک دھڑکتے ہوئے دل کا مالک۔ اس کے اپنے جذبات ہیں، اس کی اپنی آرزویں ہیں، اس کی اپنی خواہشیں ہیں، اس کی اپنی ضروریات ہیں، اس کی اپنی پسند ہے، اس کی اپنی ناپسند ہے، اور اس پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ بہت ہی معصومیت کے ساتھ ہاتھ باندھے خاموشی کے ساتھ استاد محترم کو چیلنج کر رہا ہے کہ سر میں جو ہوں تو ہوں، اگر آپ پڑھا سکتے ہیں تو پڑھا کر کوشش کر لیجیے، پڑھانے کی کوشش کر لیجیے۔ ایک خاموش چیلنج، کوئی طالب علم بولے گا نہیں، ابھی بھی آپ کے میں سے بہت سارے لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کوئی بولے گا نہیں کہ نہیں میں ایسا نہیں سوچتا ہوں، لیکن عملی طور پر ہر طالب علم یہ چیلنج پیش کرتا ہے۔ اب ایسے طالب علم تک اپنے مٹیریل کو پہنچانا ہے۔ ظاہر ہے کہ کتاب سے آپ نے مٹیریل حاصل کیا، آپ نے میگزین سے حاصل کیا، آپ نے جرنل سے حاصل کیا، آپ نے اپنی لائف سے حاصل کیا، آپ نے ساری دنیا سے ایک مٹیریل حاصل کیا۔ اس مٹیریل کو اس طالب علم تک پہنچانا ہے، اور اس طریقے سے پہنچانا ہے کہ صرف ذہنی طور پر مطمئن نہ ہو جائے بلکہ جذباتی طور پر اس کو وہ انجوائے کر سکے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ فن کتنا پیچیدہ، کتنا مشکل اور کتنا چیلنج بھرا ہے، اس بات کا اندازہ آپ قائم کر سکتے ہیں۔ بس یہ چیلنج کیا ہے اور اس چیلنج کو میں کیسے پورا کر سکتا ہوں، اس سلسلے میں میری حکمت عملی کیا ہونا چاہیے، میری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اسی پر رہنمائی کریں گے آج کے ہمارے مہمان خصوصی۔ ایک بار پھر آپ تمام کی جانب سے میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔
फल्क पर जब चमकता है हमारे अज़्म का सूरज, अंधेरे खुद ब खुद तारीकियों में डूब जाते हैं। ये थे हमारे डीन जो उन्वान के ऊपर सैर हासिल रोशनी डाल रहे थे। मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के इस शेर के साथ क़ाज़ी डॉक्टर क़ाज़ी सिराज अज़हर साहब को दावत सुकून देता हूँ। मेरा दिल क्यों न हो ख़ाइल तेरी सहर लिसानी का, सुनाए हर तरफ चर्चा है तेरी जादूबियाती का। इसके साथ ही मैं डॉक्टर क़ाज़ी सिराज अज़हर साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने खिताब से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएं। Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. میں محترم جناب رجسٹرار صاحب شیعہ احمد صاحب اور میرے عزیز دوست اور پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب اور دیگر پروفیسرز جو آج یہاں موجود ہیں، اور عزیز طلباء، they are the most important one. آپ خود اپنی ماشاءاللہ، تو بہت بہت شکریہ. نوازش ہے صدیقی صاحب، آپ ہمیشہ جو ہے مجھے دعوت کلام پیش کرنے کے لیے، یہ شاعری کا کلام نہیں ہے بلکہ دوسرا کلام ہے. یہ جو جب اسپیچ سینٹر جو ہے مرکز تکلم بن جاتا ہے بچے میں، تو قوت بیان، ابھی آپ کا خطاب میں سن رہا تھا، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اردو میں اتنا فصیح کلام کہہ سکتے ہیں. ماشاءاللہ، یو آر ویری لکی پرسن. اور مولانا آزاد یونیورسٹی جو ہے اردو کی یونیورسٹی ہے، تو ظاہر ہے یہاں پر ایسے افراد موجود ہیں الحمدللہ. تو آج جو ہے مجھے جو ٹاپک دیا گیا تھا، I'm quickly going on my subject. Effective teaching strategy and role of teachers. It's a big topic. It includes a lot of subtopics. And one thing which is very important, ایسا لگ رہا ہے زلزلہ آ رہا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے. جی، تو میں جو ہے سوچ رہا ہوں کیسے شروع کروں. تو جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ What is the purpose of education? Education means trying to understand new knowledge. And there is a learner. ہم اسٹوڈنٹس نہیں کہتے بلکہ ان کو لرنرس کہتے ہیں ہم آج کل. And the learner could be a student, or it could be a teacher also. When you are teaching, you are learning side by side.
Okay. इसमें कहाँ है? Open device. जी आप निकालिए, मैं फिर तो nowadays I'm especially paying attention on mother tongue as a medium of instruction. There are a lot of studies have been conducted, and in fact, new education or National Education Policy 2020 talks about mother tongue, and they strongly recommend mother tongue as mode of instruction up to 5th grade. Up to 5th grade. And it is recommended up to 8th grade. And then optional till high school. So foundational or the basic education should be in the mother tongue. This is not just me. UNESCO in 2008 has strongly recommended, and also they did a study why some of the developing countries have not developed, and they found out because they are not teaching their kids in mother tongue schools. Very sad. Still, and they also found out that, thank you, that's great. शुक्रिया, उसको ओपन कर दीजिए. Great, thanks. Oh yeah, किधर इसी को नहीं, how to next. ठीक है. I was just trying to tell you what's going on right now at the global level. So the reason was they found out that British colony, those countries which were ruled by British colony system or French colonies, they have English medium schools. Even though the mother tongues, like in here, mother tongue is Telugu. You know, many families who speak Telugu, and there are many families who speak Urdu, and these children are born to them with Urdu as mother tongue or Telugu as mother tongue. Let's take this state. Similarly, Maharashtra has Marathi and Karnataka has Kannada. They found out that, you know, one of the reasons why these countries did not progress in science and technology is because they are not learning in their mother tongue. Alhamdulillah, we have Urdu University here because Hyderabad and in the vicinity, Zahirabad and all those places have a lot of Urdu speaking mother tongue families. And same thing, I have no discrimination with even English. If your mother tongue is English, please make sure that your children are educated in English medium schools. So that's the other thing I'd like to say, and very often we tend to forget that we are not just teaching ears, to the ears or to the eyes, but we are teaching to the brain. I know the person who came up with brain-based education, Dr. Lawrence Lowry, he was my friend.
And he first came up with articles on brain-based education. If you want to enter into the classroom, first you should know the brain of that student, the students you are going to teach. Nowadays, we don't talk about teaching. We want students to learn. You could teach, but they may not learn. Best example is the child who started learning the language of mother when even the child was not born. At the age of 6 months, intrauterine, in the womb of the mother, when the external ears were formed, the child was listening to the mother's voice, because voice is conducted through the body, through the amniotic fluid around the baby, and through the ear, the child is listening. This is the time when the speech center is developing. And the speech center is developing in mother tongue. And then, when the child is born, who is around that child? What language they are speaking? There may be brother, sister, and uncle, grandpa, mother. I'm sorry, माफ करना, मैं अंग्रेजी में शुरू होगा, उर्दू यूनिवर्सिटी है. तो अपने आजू बाजू जो है उसके बच्चे, क्या यहाँ तक कि वो गली में जो बच्चे खेल रहे हैं वो भी जो है, अगर वो मदर टंग उसकी जो है तेलुगु है तो तेलुगु में बात कर रहे हैं, है ना. तो हम जो है क्या करते हैं, उसको 5 साल की उम्र होती है तो किंडरगार्टन में पहले नाम लगा के रख दिए, कैसे हो, इंग्लिश मीडियम में, कॉन्वेंट स्कूल हो या जो भी हो, कोई भी स्कूल हो. आजकल तो ऐसे मशरूम भी उतनी नहीं निकलते जितने जो है सो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स निकल रहे हैं. अब इट्स रियली अनफॉर्चुनेट थिंग व्हाट आई एम सीइंग एंड इट इज हर्टिंग मी. और आप बोल रहे होंगे कि हाँ जी डॉक्टर साहब, आप खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, क्योंकि जो अंग्रेजी फटाफट बोल रहे हैं आप. मगर आपको हकीकत बताऊं, उर्दू स्कूल से मैंने हाई स्कूल किया है, और तबैयात, कीमिया वगैरह सारा जो है मैंने उर्दू में सीखा है. और सब में बेहतरीन जो मजमून था वो मेरा साइंस था, क्योंकि जो मादरी जबान में साइंस पढ़ाई गई वो हमें समझ में आई, समझे. इसी तरीके से जो रियाजी हमें अलजबरा जो सिखाया गया वो हमें समझ में आया. अब देखिए, क्योंकि जो मुझे उन्वान दिया गया था, इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी एंड रोल ऑफ टीचर्स. चेन्नई में I was giving presentation to a huge number of teachers. So I was talking about mathematics, हिसाब रियाजी के ताल्लुक से, अलजबरा के ताल्लुक से. तो उसके बाद थोड़ी देर में एक साहब वहाँ से, एक टीचर ने कहा कि भाई, हाथ रेस किया, कहा कि भाई, when do you teach algebra in USA? Oh, मैं समझ गया है क्या इसका अंदाज क्या है. जिस अंदाज से सवाल किया जाता है वो बंदे को जवाब मालूम है. तो मैंने कहा कि भाई 8th ग्रेड जो होती है उसमें प्री अलजबरा होता है, और 9th ग्रेड से अलजबरा शामिल हो जाता है कोर्स में. तो उसने कहा, यू नो सर, वी टीच अलजबरा इन 6th ग्रेड. बहुत अच्छा काम करे. Then I said, if you teach in 6th grade, I can make sure that I can teach these students from kindergarten algebra. हंसना शुरू करा. What is algebra? First of all, see, we memorize formula. Sin theta plus cos theta tan theta is equal to mc square. So
A plus B whole square, A square plus, सब रटे रटा है मामले सब, formula type of education है. But they do not get the concept of algebra. क्योंकि आज का मजमून है, तो इसी मजमून के ताल्लुक से कहना चाहता हूं मैं कि I said in kindergarten बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, A for apple तो मालूम है उनको, A for apple. जिंदगी में देखे नहीं देखे पता नहीं, मगर जो सो एप्पल पिक्चर में तो देखे. वो जो है मैंने कहा कि you know, I'm going to teach algebra to kindergarten students. So this is an apple. I put one apple on the table and ask the students how many apples there. They will say one apple. You put another apple, how many? 2 apples, 3 apples, 5 apples. And I took away 2 apples. How many remaining? 3 apples. Great. But you know that A is for apple, isn't it? Children will say, yes. Then, when I put 1 apple, instead of saying 1 apple, you should say A for apple, isn't it? 1A. I put second one, 2 A's, 3 A's, 4 A's, and 5 A's. I took away 3. How many left? 2 A's. What I'm doing? I'm doing addition and subtraction in algebra. This way they know that X, Y, and all those the alphabets you are using in algebra has a meaning, an object. It could be a car. It could be a, your cell phone. How many cell phones? Instead of cell phone, you put C. So this is how they learn. This is what is algebra. Our kids do not understand the basics. Why? Because they are not taught in their mother tongue. I can give the whole day. I could present why mother tongue is important. So this is the reason. So I'm sorry because in between the PowerPoint was not working. So now I can start the next slide. So we do not teach ears, which we try to do most, but we teach the brain. Got it? So the most important thing in teaching and learning is concerned with the brain, and brain is consisting of neurons. इसको उर्दू में क्या कहेंगे? असबी खलिए. Okay? So that is most important part. Another thing, I was talking about embryology, isn't it? At 6 months, the baby start hearing the mother's voice. But I will take you back even further, in the earlier stage of the embryo. And as you can see here, pointer. I think I can show. Do you have the pointer? Oh, good. Yeah, I have. Thanks. So this is the earliest part of the embryo, and in this you are seeing 2 lobes here. This is the front brain, this is the hind brain, and this is the neural crest which run all over this embryo. And this neural crest is in the form of groove, but later it fused together and it becomes the spinal cord. Spinal cord. Got it? So if you look at this, major portion of the embryo is all nervous system.
Brain. So it is so important when God has made the embryo, earliest embryo, the most important part which was made was the brain and the neural cord. वो जो भी nerve cord है वो बनी है. तो इसके बाद एक और चीज याद रखिए, any type of learning, the best learning occurs in students, but with curiosity. The child has to be curious, and the next thing which happens is that the child or the student will start doing something. When you do something, you use your hand. Got it? So hands-on, curiosity-based or inquiry-based. This is the best way students learn. Again, effective teaching. If you want to be effective teacher, you should know that students learn any subject, not only the science, by doing it. Social studies, for example. You said now it has become social sciences. Sciences is everywhere. Science of education. We used to call, हमारे सिद्दीकी साहब ने कहा कि हम कहते थे कि उसको वो एक फन है. वो फन भी है, इसमें कोई शक नहीं. उस फन को समझने के लिए उसकी साइंस समझना चाहिए. तो इसलिए कहते हैं कि साइंस ऑफ एजुकेशन. इकोनॉमिक्स है, साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं. You have to learn, you have to do those projects and let the kids do the project. इकोनॉमिक्स में होता क्या है भाई, कितनी आमदनी है, कितना खर्च हो रहा है, क्या हम अंडर बजट है या ओवर बजट है. वो कंट्री लेवल पर भी वही होगा, घर के मामले में भी वही होगा. सब बच्चे को मगर समझाना है तो उसको आप एक प्रोजेक्ट दीजिए. उसको बोलिए कि घर जाइए, घर जाकर घर से पूछ, या नहीं तो किसी बाजू पड़ोस में जाकर उनसे पूछिए कि हर महीना कितनी आमदनी है. राइट इट डाउन. रोज, या नहीं तो कोई रोज काम करता है, रोज पैसे आते हैं उसको. जैसे वो ठेले वाला है तो उसको कहें कि भाई रोजाना कितने पैसे आते हैं, कितना कमाते हो. फिर इसमें जो है आप महीने में कितना कमा लेते हो. मिर्ची, नमक वगैरह, ये ना घरेलू जो ग्रोसरी है जिसको उसका कितना खर्चा है. फिर कपड़े वगैरह भी बनाते हैं, उसका कितना खर्चा है. और क्या आमदनी ज्यादा है या खर्चा ज्यादा है. बच्चे को बड़ी दिलचस्पी होगी भाई. ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है. आपने मंसूबाबंद तहसील करना है. तो ये जो है हैंड्स ऑन इंक्वायरी बेस्ड मेथोडोलॉजी है. इट कम्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, इट्स जस्ट नॉट साइंस. ऑलराइट. तो इसको मैंने बताया. देखिए बच्चे यहाँ जो कुछ कर रहे हैं वो हैंड्स ऑन इंक्वायरी बेस्ड है. So there are two ways, the three ways students actually, this is continuation में learn करते हैं ये. First, they have curious mind, so they have some kind of inquiries. आप बच्चे को सेल फोन दे दिए, आप कुछ भी मत बोलिए उसको, सेल फोन दे दीजिए. क्या करेगा? हैंड्स ऑन, इधर उधर फिंगर्स चलाएगा, वो फिर उसका बटन दबाएगा, फिर देन you know, because he has the inquiry. Let him learn through his inquiry. और हाल ये हो जाता है एक चंद हफ्तों में आपको सेल फोन में मसला हो जाता है तो क्या करते हैं आप, वो बच्चे को देते हैं, बताओ बेटे ये जरा कैसा करता. करते नहीं करते. So inquiry, and he has a curious mind, investigative, so he investigates and oh ये switch इसको दबाए तो जो है सो you know this is happening. You know there are 3 buttons and he uses it. It trial and error. Okay. And then he analyze and find out, my God, you know, if I have to open up the WhatsApp, this is the icon, I have to press 2 times. So he learns through that. And the same way here, the child is trying to see
The flower wants to know what is, I see there are big petals, colorful, very nice, but wants to know, or there may be a small insect, want to see what insect is doing. So hands-on inquiry-based methodology. I'm not going to go in detail because I'm not. Now the technology has advanced so much. This was intrauterine, ultrasound है इसके बच्चे का, बच्ची का, और see the same face. How close resolution. So, and at this age, the child is listening to the mother. I'm not going to go in that detail, and I'm sorry. And our brain constantly emits electricity, and if you run out of electricity, tomorrow is your exam. It can produce. You can use that 25 watt bulb and light up that bulb with that brain activity. All right. Can anybody say what bird is this? Except those who were in my previous. Anybody? क्या है, कौन सा है, क्या बोल रहे? Anybody? Why are you? One of the reasons, I'm not going to keep on asking questions. Why you did not recognize this bird? Because you have never seen this bird. And if you see in your life, if it has come only once in a while, you saw in your, on WhatsApp or somewhere, but you tend to forget within few days. This bird has to come constantly in front of you. Then only you will say, oh, this is cardinal. What is it? Cardinal. And cardinals are not here in India. All right. And how about this bird? Yeah, sabko malum hai, because you have seen this. Now I want to tell you why you are recognizing this bird, why you did not recognize that bird. This is very important. When you are teaching, if you teach them and they understood, it has to be revised. What it has to? It has to be revised repeatedly. They should recollect or see it. Rozana kitne kawwe dikhte? You don't have to revise that kawwa ka mawala. Every day you will see that. You won't forget it. Every time a new thing is seen, a connection develops in your brain, neuronal connection. And this neuronal connections are not permanent. You forget. If you can forget because connections are not anymore there. All right. So ye ho gaya. I'm not going to go in all those things. And okay. Again, I'm not going to. Okay, this is very important. This is cross section of the brain. Just took a section, and this is one. Usually, the brain has two hemispheres. We are taking one hemisphere. If this is right side, it is the body which is represented is on the left side. That's why if somebody has lahwa or hemiplegia, if this side brain is affected, the left side is affected, the right side will be paralyzed. Okay, so in this, the body is represented upside down. The smallest portion is your foot, and it's in this area. And can you tell me which is the largest area? Which is the largest area? Can you show your hand? I said already the answer. The hand is the largest area.
Am I right? Why hands-on is very important in teaching? Hands-on is very important in learning. So hands-on inquiry-based methodology, because students learn, even adults learn better when there is hands-on. So when you give them a project, they learn better. If you ask them to read science, they are not doing, they are just reading. If they do first hands-on activity, then their learning is the best. And more the senses are used, better is the learning. जितने भी हवा से खमसा जैसे है ना 5, उसमें जितने ज्यादा इस्तेमाल होंगे उतना ज्यादा जो है. और मुझे जरा बता दीजिए कि कब मेरा 1 घंटा खत्म हो रहा. जी जी. So this is very important. This is the reason. There is a reason behind everything which happens. So if you want to be effective teacher, let them learn by hands-on inquiry-based methodology. सीख कर जाइए. आज इंग्लिश मीडियम स्कूल पहली बात, language is not our language. The students are not learning. And the other thing what we are doing, we are just teaching them verbally. Second thing, you fail. Let them do some activity and learn it. That way, they are the best learner. Don't teach them like a adults, lecture type. There is no picture memory, so don't worry about that. And these are the, I'm going to go and now, जैसा कि कहा गया है, effective teaching. Teaching that works. Let's take science curriculum. And in this, when you are teaching, you want to know what you are teaching. Okay? Which we call content of the curriculum. जो निसाब है, वो जो है, what to teach. Then, how to teach. अब सिखाना है. That is how you are going to teach. And that deals with teaching methodology. And then next is when to teach. कब सिखाना है. That is aligning the curriculum with the age. This is the most important thing. We don't do it. What we think, how we make curriculum, like adults, you know, हम सोचते हैं, मगर वो बच्चे का दिमाग कितना सीख सकता है वो नहीं सोचते. हम सिखाकर हम क्या सिखाना है वो सिलेबस बनाते हैं हमारे दिमाग से. हम वो बच्चा कितना सीख सकता है वो उस लिहाज से नहीं बनाते. इसको बोलेंगे हमें aligning the curriculum with the cognitive development of the brain. वो ब्रेन की जो दिमाग की सलाहियत है, हर बच्चे की दिमागी सलाहियत एक सा नहीं होती. उसके दिमाग की उम्र के साथ होती है. 1 साल का बच्चा है, उसका दिमाग जो है 2 साल के बच्चे का वैसा नहीं है. 6 साल का बच्चा है, उसका दिमाग जो है 8 साल के बच्चे की तरह नहीं है. जब आप 6 साल के बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं तो निसाब ऐसा बने कि वो बच्चा उसको समझ सके. इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग. और हमेशा याद रखिए, वो बच्चे को सीखने का मौका दीजिए, आप सिखाइए मत. हम लोग क्या करते हैं, टीचिंग
It's not teaching, it is learning is very important. And you have to learn when to teach, what to teach. बहुत अहम बात कर रहा हूं मैं. तो यहां से आजकल के बच्चों का हाल, overburdened with lot of curriculum. जो सिलेबस है आपका इतना ज्यादा है कि वो बच्चे जो है बेचारे जो है, किताबें उनकी कितनी, उनका बस्ता इतना वजन, they carry so much stuff. Nowadays the goal is teach less in depth. कम सिखाइए, गहराई में सिखाइए, सुपरफिशियल नहीं, सतही आप जो है उनको इल्म नहीं देना चाहिए. खूब सिखा रहे हैं, फायदा क्या? प्राइवेट स्कूल्स, जो खानगी स्कूल्स होते हैं ना, और यहाँ 5वीं जमात तक आप अपना टेक्स्ट बुक सकते हैं, 5वीं जमात तक. तो जब ये उनको आज़ादी मिल गई तो खुसूसन इंग्लिश मीडियम स्कूल वालों को वो क्या किए, गवर्नमेंट का सिलेबस देखे, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या जो निज़ाम क्या या आसाबी निज़ाम जो है 9th की ग्रेड में है. तो इन्होंने बोले क्यों ना हम इसको 5वीं ग्रेड में डालेंगे. और वालिदैन आते, पहले तो अंग्रेजी के शहदाई वालिदैन आ गए, फिर आते से देखो भाई हम, ये आपका बच्चा जो है यहाँ कितना ज्यादा सीखता, देखो हमारे पास हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 8वीं 9वीं जमात में पढ़ाते हैं मजमून, तुम्हारे पास 5वीं जमात में सीख रहा. ऐसे ओ बहुत इंप्रेस हो जाते हो लोग, माँ बाप, अरे क्या भाई सुपर इंटेलिजेंट निकलता जी तुम्हारा बच्चा, अब तक सर सीवी रामन पैदा नहीं हुआ. अब क्या करना है मालूम हमारे को, जो काम करे उसको उल्टा करना है. इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले जो है सो फर्स्ट यूकेजी, एलकेजी, यूकेजी से उर्दू मीडियम लाना, तेलुगु मीडियम लाना, gradually replace all that. Though you know this is the worst thing which is happening. बच्चा जब समझता नहीं है तो क्या करता बोलिए, रटता है, तोता हो जाता है. तोतों की फौज तैयार कर रहे हैं. जो कर रहा हूं ने a+b होल स्क्वायर, ओहो a स्क्वायर + 2ab जिंदगी में कभी इस्तेमाल करे नहीं करे, मगर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू बराबर करे. इफ a = 2, a + b वो डाल के करके वो निकाल लेते व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b. कई के वास्ते, एग्जाम पास करने के वास्ते. मैं जो है आप असातिज़ा है, असातिज़ा बनेंगे आगे. मैं आपको ये बात जो है अपने तजुर्बे के साथ कह रहा हूं. तो गोल्स जो होते हैं जब करिकुलम बनाते हैं, one thing you should remember, the students learn by experience, experiential. जी, तो एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से अपने वो सीखते हैं. मैं आपको कोई प्रेजेंट कर रहे थे एक पेपर, उसमें कहा गया कि शहरी बच्चे जो होते हैं वो बहुत होशियार होते. मेरा एक अनदर टॉक है, नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम यू प्लीज लेट मी नो. इंटेलिजेंस, वो मल्टीपल इंटेलिजेंस, वो ये अभी भी देते थे, सब चले गए, वो सब बेकार हो गया, वो सब थेरीज ही रह गए. वो दे वर जस्ट थेरीज. वो पेशे का भी वो भी थेरी था, वो शुरू वो भी खत्म हो गया. बहुत सारे
जो theories आए वो खत्म हो गए. Now, who is most intelligent? तो साहब ने वो किया कि अर्बन स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही होशियार होते हैं. अब उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस के तहत उन्होंने पूरा अपना डाल के नंबर दे के इनको आगे कर दिए. मेरा क्वेश्चन ये था, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस को उर्दू में क्या बोलेंगे? जहानत. जहानत जो है क्या चीज है? एक गांव का बच्चा है, उन्हें मैं इसके लिए I did one thing. I showed a video where the river is flowing and there is a stick in the river. एक झाड़ है और मैंने बच्चों से सवाल किया कि भाई इसमें नदी किस तरफ बह रही है. हमारे बच्चे कंफ्यूज्ड. चार दीवारी में जो कोचिंग सेंटर्स क्या क्या बोल लीजिए, इंग्लिश मीडियम, जहीन तरीन बच्चे, they couldn't tell. एजुकेशन का मकसद है लर्निंग, नॉट मेमोराइजिंग. रोट लर्निंग नहीं, लर्निंग, रियल लर्निंग, नेचुरल लर्निंग, फितरी तौर पे सीख रहे हैं वो बच्चे. तो गांव के बच्चे को पूछा, गांव के रूरल एरिया में भी वही वीडियो बताया. बच्चे बोले इज गोइंग ऑन दैट साइड. हरी, intelligence is nothing but the experience the child will have. The way the child learns is hands-on and looking, observation, and this is what is learning. आप उनको किताब देके रटा दिए, they don't have any experience. तो ये चीज आप याद रखिए. Provide all students science experience. Mark that experience according to their cognitive stages of development. आप एक जो 2 साल का बच्चा है उसे ज़रब के पहाड़े नहीं पढ़ा सकते, पढ़ाते. उन्हें दूसरी जमात में आया तो शुरू अंग्रेजी में तो 2 2 जा 4, ये जा क्या है उसको मालूम ही नहीं. अब हंसना रोना चला, मक्खी का मक्खी. वो एक साहब जो है तो पढ़ रहे थे किताब में, तो ऐसा किताब बंद करे तो एक मक्खी ट्रैप हो गई, उसमें पिचक गई. अब दूसरा आया पढ़ने, उन्हें वहां तक पढ़ा, देखे तो मक्खी है. उन्हें एक मक्खी पकड़ा, मार के फिर मक्खी का मक्खी. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली. अच्छा, प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर मोर एडवांस आइडियाज इन कॉमन. तो हमारे पास वही है ना, आसानी से मुश्किल की तरफ जाइए. आसानी के से बच्चे को जो है पहले समझ में आया, उसके बाद. और हमारा जो सिलेबस है इट शुड बी इन ए कंटिन्यूअम. निसाब जो होता है हमारा, आप मोशन है, किंडर गार्डन में मोशन सिखा सकते. फिजिक्स में एक बाल लीजिए, बाल को रोल करिए, बच्चा बोल रहा है उधर जा रहा बाल, क्या हुआ, बाल रुक गया. क्यों रुका, उन्हें खुद बोलता, वहां अटक गया जाके. I mean, simple thing. And the same motion, with what speed it went, and all those, as the child grows and goes into the higher grades, you start introducing the formulas. Then the child, let him make a formula. You don't make formulas. And then at the end, you give the formula. Is this the right formula? Or do you have something better idea? इस तरीके से पढ़ाना चाहिए बच्चों को. हम लोग क्या करते, बस सिलेबस कंप्लीट करना है, वो बोलते गवर्नमेंट टीचर्स का ये हाल. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल. Provide teachers with complete, flexible, easy to use science program or any program. All right, then reflects current research and learning. ये बहुत अहम है. टीचर बन गए एक मर्तबा तो we don't keep up with the advanced research. तो जैसा मैं आज कह रहा हूं, पहले हम क्या करते थे, theory first, then what,
practical later. Now it is reverse. Practical, hands-on first, and then you don't have to tell the theory. Students will let you know what is the definition, what will be the formula. They will tell you. If you acquire this kind of a knowledge, then that knowledge will never be forgotten, and these students will be creative. तख्लीकी और तहकीकी और तनकीदी सलाहियतें पैदा होती है. कितने एकदम बोला देखो मैं, सब खीकी है. तहकीकी, तख्लीकी और लास्ट का क्या बात है. यू आर गुड लर्नर्स. सिद्दीक साहब, आप कमाल कर रहे हैं. आपके स्टूडेंट्स जबरदस्त हैं. इनमें तहकीकी, तख्लीकी और तनकीदी सलाहियतें मौजूद हैं. माशाअल्लाह. आपको हंसाते भी रहना पड़ता. तालियां मारिए. तो आप मुझे बोलिए कि मेरा कितना और कितना. हाँ, अच्छा, कैरी ऑन. हाँ, कंक्लूड कर देना. अच्छा, इसके बाद 21st सेंचुरी आ गए ना, तो कंक्लूड करना पड़ता है. Meet the expectation of science achievements and standards of the next generation. I have, how to learn science, and right now STEM. आप लोग STEM सुने होंगे. अब STEM हुआ, STEAM हुआ, स्ट्रीम होगा. ओके. अब जो है उसके बेसिस पर एक करिकुलम डेवलप हुआ, उसको कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन साइंस स्टैंडर्ड. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं उसको पेश करूंगा. और देन व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन नॉट टीच ओल्ड नॉलेज. दुनिया आगे निकल गई, हम वही पीछे का पीछे ही रट्टू के टट्टू रह गए. तो हमको 21st सेंचुरी का एजुकेशन देना पड़ेगा हमारे बच्चों के लिए. वो 21वीं सदी की तालीम देनी होगी, और वो भी तालीम ऐसी देनी होगी जो बच्चे समझ सके. एजुकेशन का मकसद है, तालीम का मकसद है समझकर सीखना. I think if you have any question, you can ask me any questions. I will stop right here. आप सवालात उर्दू में करिए, तेलुगु में भी कर सकते हैं. Kalpana madam is here, so she can translate me, and there are so many other madams who knows Telugu also. So I love mother tongues. तो सवाल, जितने सवाल आएंगे इसका मतलब ये होगा कि आपने समझा है. If you have any questions, please go ahead. हाँ, पूछिए. लेकिन कहा जाता है कि जब मेमोरी फॉर्मेशन होता है तो मेमोरी दो तरह का है, एक परमानेंट होता है और एक हमारा कुछ ही देर के लिए होता है. तो जो परमानेंट मेमोरी है उसके लिए तो कनेक्शन की जरूरत है. तो व्हाट अबाउट द परमानेंट न्यूरल कनेक्शन? कौन सा न्यूरल कनेक्शन? ओके, थैंक यू. बताओ. अब जो वर्किंग मेमोरी है, फॉर एग्जांपल, ये जो है हम बीएड वाले, एडमेट वाले बनाए हुए मेमोरीज. वो ड्रार होता, उसमें दिस इज हाउ दे टीच इन बीएड एंड एमए. तो एक जो है, यानी जस्ट द पर्सन गॉट द सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इट गोज इन द रीसेंट मेमोरी. ओके. उसका एक ड्रार है, और वो ड्रार खुलता, और आपके पास एक ड्रार है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी का है. ओके. एंड इन बिटवीन एक वर्किंग मेमोरी है.
तो रिसेंट मेमोरी को क्या करता हूं, उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी को निकाल के फिर वर्किंग मेमोरी इसमें कैसा अप्लाई करना है उन्हें ये करता, मगर एक्चुअली दिमाग में ऐसा नहीं होता. This is very interesting. So new books, I will give the answer later. Assalamu alaikum. वो आपका जो सवाल था, it's just a question answer session. So what happens is every time you look at certain thing or feel something or taste something, a memory develops. What is memory? A neural connection develops. For example, I'm eating Himayat, वो जो आम है, and तोतापरी भी एक आम है. But as soon as I say totapari, a taste come into your mind. In the area where ये जो आपके taste buds है, they are connected with nerves, and in the brain there are some connections which have developed, and those connections get activated. वहाँ पर जो है electrical charges आते हैं उसमें, वो connection जो है fires up. And this is totapari. You ask him to close his eyes and just give the taste of salt. वो बोलता है salt है. कैसा? Because that memory has developed, and there is no long term or this time. You keep like salt. Every time you taste the salt, you are renovating that memory connections. समझ गए ना आप? अब जैसे मैं आपको कार्डिनल का बर्ड का बताया, you never saw that bird. Because those connections have not developed in your brain. And then I showed you the parrot, you recognized it because those connections have developed. If those connections are repeatedly stimulated, it becomes long-term memory. That's what you have to teach. When you teach students, don't just teach one time. मतलब है कि बच्चे सीख रहे हैं तो उसको रिवाइज भी करते रहना, क्योंकि वो कनेक्शंस जो डेवलप हुए हैं ना, वो परमानेंटली एग्जाम में जाने से पहले उसको पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है उसे, क्योंकि ऑलरेडी ही डेवलप्ड द लॉन्ग टर्म मेमोरी बाय रिवाइजिंग इट. उसका भी है मेरे पास, बट यू नो, आई मीन इट टेक्स सो लॉन्ग फॉर मी टू, यू नो, each topic, memory itself, I can spend the whole day on that. That is a good question. You know, I mean, we have made like, you know, functional memory बोल के हम बताते हैं, long term memory, recent memory, but there is no division like that. Nerve cell is one and connections develop. Thank you. सवालात का मौका आपको दिया गया था. आप हजरात ने अपने इश्कालात को सामने पेश किया, जिसका इन्होंने भरपूर उसका जवाब दिया. ये थे परों को मिलेगी मंजिल, ये इनके बिखरे पर बोलते हैं, वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं. ये थे क़ाज़ी सिराज अज़हर साहब. मैं अब इस मौके के ऊपर हमारे एक हम पेशा डॉक्टर रुबीना की किताब के रस्म इजरा के लिए मैं उन्हें मदऊ करता हूं कि वो अपनी किताब शेखुल जामिया और हमारे मेहमान मुकर्रर के हाथों ये करें. मैं सदर शोबे तालीम व तरबियत से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लें.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी थैंक यू। डाइस पे तशरीफ फरमा इज्जत माब शेखुल जामिया साहब और आज के हमारे मेहमान मुखर्रिर डॉक्टर सिराज काजी अजहर साहब और हमारे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर इश्तियाक अहमद सर और मेरे गाइड, मेरे रहनुमा, मेरे उस्ताद प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब और मैडम शगुफ्ता शाहीन मैडम जी और प्रोफेसर मोहम्मद मुशाहिद सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी एक छोटी सी कोशिश को आप लोगों ने अपने हाथों से इस किताब का रस्मी इजरा किया और इसको शर्फ बख्शा। और इस किताब के साथ, क्योंकि मेरी पहली किताब है, तो इसके साथ हर शख्स की अपनी कुछ मेमोरीज जुड़ी होती है और कुछ उसके साथ जो आसान वक्त और मुश्किल वक्त दोनों इसके साथ जुड़े होते हैं। तो उसी तरह का कोई एक सफर रहा इस किताब के मुकम्मल होने में। और मैं यहाँ पर इस बात का भी तज़किरा करना चाहूँगी कि इस किताब को मुकम्मल करने में मेरे मुशफ़िक़ उस्ताद प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब की बहुत रहनुमाई रही है और आपने मुझे हर कदम कदम पर गाइड किया है। आपकी रहनुमाई और आपका दस्ते शफ़क़त है जिसने मुझे इतना हौसला बख्शा है। तो और मैं आखिर में हमारे शेखुल जामिया साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस मौके को मेरे लिए यादगार बना दिया इस किताब का रस्म इजरा करके। जी, ये जो किताब है इसका टाइटल है शख्सियत की इर्तिखा में हमनिसाबी सरगर्मियों का किरदार। यानी अभी हम जिस तरह से एक लेक्चर सुन रहे थे कि टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज, उसी तरीके से जिस तरह करिकुलम का किरदार है उसी तरीके से को करिकुलर एक्टिविटीज का भी किरदार है बच्चों के डेवलपमेंट में। तो उन्हीं चीजों के ऊपर एक तहकीकी काम किया गया और उस तहकीकी काम को किताब की शक्ल दी गई है कि किस तरह से को करिकुलर एक्टिविटीज बच्चों के अंदर कायदाना सलाहियतों को फरोग दे सकती है और उनके अंदर की जो समाजी मिलनसारी है उसको किस तरह से वो बढ़ा सकती है। इन्हीं मौज़ूआत का इंतखाब करते हुए इस किताब को लिखा गया है या इस काम को मुकम्मल किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं रजिस्ट्रार साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बेहद शुक्रिया। अपने मेहमान मुकर्रिर जनाब डॉक्टर काजी सिराज साहब की जो लेक्चर था, यकीनन नहायत अहम मौजू पे आपने गुफ्तगू फरमाई और जिस तरह की टीचिंग स्ट्रेटजी एक टीचर के लिए क्लासरूम में होनी चाहिए या क्लासरूम के बाहर होनी चाहिए या स्टूडेंट को क्लासरूम में कैसे इन्वॉल्व करना है, बगैर इन्वॉल्व किए हुए हम टीचर अपना काम शुरू कर देते हैं, उसके तरफ ख़ास तौर पे उन्होंने इशारा किया। ये नहायत अहम पॉइंट है टीचर्स के लिए कि पहले हम अपने स्टूडेंट को जानें, उनके ब्रेन को, जैसा कि उन्होंने कहा, क्या एक्टिविटी उनके माइंड में रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या वो सीखना चाहते हैं, इस पहलू पे हम ख़ास तौर पे तवज्जो दें, अपने आप को सलीके से तैयार करें और फिर जो चैलेंज है क्लासरूम में स्टूडेंट को फेस करने का, उनको टीच करने का, उसको हम बखूबी अंजाम दें। मुझे बहुत उम्दा लगा ख़ास एक चीज़ के बहुत सारे कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव साइंस की तरफ आपने इशारा किया जो आजकल नहायत अहम है टीचिंग में और इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए। इस पे भी हम टीचर हजरात को ख़ास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। यकीनन बहुत उम्दा लेक्चर था।
اور مجھے لگتا کہ بہت ایسا لگا کہ بہت ناکافی ہے. اس کے لیے کئی پہلو ہیں, جیسے آپ نے مختلف اہم پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا, آپ نے ملٹی انٹیلیجنس کی طرف اشارہ کیا, اس میں بھی ظاہر ہے آپ کا بہت عمدہ لیکچر ہوگا, دوسرا پارٹ ہوگا. جیسا کہ آپ نے فرمایا, یقیناً نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے ہم لوگ اس سے استفادہ کریں گے. بہت شکریہ. آپ نے اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے اس دعوت کو قبول کیا. ہمارے طلبہ اور اساتذہ کے بیچ آپ نے اتنی افیکٹو ٹیچنگ میتھڈس کے بارے میں جو آپ نے اسپیشل لیکچر دیا, ہم سب آپ کے لیے بہت ممنون و مشکور ہیں. بہت شکریہ. ساتھ میں ڈاکٹر روبینہ کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں, اور اس کتاب سے انشاءاللہ ہم لوگ استفادہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اب آخر میں ہم سب شیخ الجامعہ کا صدارتی خطبہ سننے کے منتظر ہیں. میں اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت دیتا ہوں. نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتے ہیں یہ سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر. اب اس سے پہلے شیخ الجامعہ کا خطاب ہو, OSP میڈم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم. سوری میں تھوڑا لیٹ آیا, اور بیچ لیکچر میں یہاں پہ تھوڑا بہت اس سے فائدہ ہوا جو سر لیکچر دے رہے تھے. جو ٹائٹل ہے آج کا کافی انٹرسٹنگ ہے, افیکٹو ٹیچنگ اسٹریٹجی. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ افیکٹو ٹیچنگ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے, کہ از اٹ اے اسٹینڈرڈائز افیکٹو ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے کیا. اس کو اپنے کو سوچنا چاہیے, بیکاز میرے حساب سے جو افیکٹو ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے وہ ہم سامنے اپنے اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے وہ ایوالو ہوتی ہے. ایک فکس ٹیچنگ اسٹریٹجی نہیں لے جا سکتی ٹیچر کوئی بھی کلاس میں. Depending on the needs of the students, we need to keep changing our teaching strategies. Second thing, I was also thinking of the second aspect of the title of today's lecture, role of a teacher. And when we go back to history, اور اب ہم دیکھیں کہ جو ٹائم پر دروناچاریہ کا جو رول تھا ٹیچر کا اسٹوڈنٹ کی زندگی میں, جو ایک ریلیشن شپ تھی, how we have evolved, how we have changed from then to now. Are we in that same role model, or there's a different expectation from teachers regarding students and vice versa? So it's not the change, it's change. So it's an evolving society. We have also evolved as teachers. آج آپ لوگ وہ سائڈ ہے ڈائس کی, ہم لوگ یہ سائڈ ہے, بٹ اٹس ناٹ اے فکس ریلیشن شپ. کئی بار ہم لوگ لیکچرس کو وہ سائڈ بھی بیٹھنا پڑتا ہے. تو nothing is fixed, just like knowledge کا end is not fixed. The day you think that you know everything, that is the end of I think that is the last day of your life. As long as you are alive, you need to learn and evolve. So knowledge, whether it's a student or teacher, I think we need to constantly evolve ourselves. Thank you, sir, for a wonderful lecture. Usme thoda humor bhi le rahe the, sir, to make it more effective. Thank you, and hope all of you have enjoyed, apart from learned from that lecture. Thank you very much. ڈاکٹر سراج صاحب, پروفیسر صدیقی محمود صاحب, پروفیسر شگفتہ شاہین, رجسٹرار اشتیاق صاحب, اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے نہیں یہ, ہاں, مشاہد صاحب. میں شاہد اور مشاہد میں بہت فرق کر جاتا ہوں کبھی کبھی. شاہد مجھے مشاہد نظر آتے ہیں, مشاہد شاہد, اور دونوں جو ہے مشاہدے کے بنا پر ہیں. بہت اچھا. مجھے یہاں آپ کے درمیان آتے ہوئے کافی اچھا لگتا ہے, اس سے کہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی 31 تاریخ تک ڈیٹ ہے ایڈمیشن کی, مگر تقریباً 550 بچوں نے ایجوکیشن میں اپلائی کیا ہوا ہے ابھی بھی اس تاریخ. یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آواز دور دور تک ہے اور لوگوں کا انہماک ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آنے کے لیے. سراج صاحب کا میں لیکچر نہیں سن پایا, بس مجھے یہی سنائی دیا طوطا پری, اور میں چلا گیا اپنے 14-15 آم کے جو درخت ہیں ان کو دیکھنے لگا, اس میں کوئی بھی ایک بھی طوطا پری نہیں ہے.
تو یہ تو طے ہے، آم کے عاشق ہیں، طوطا پری کہیے گا تو طوطے کی طرف نہیں جائے گی بات، وہ آم کی طرف جائے گی. جیسے کہ طوطے کے پر جیسا، ٹھیک ہے جی. طوطا پری میں طوطے کے پر جیسا. لیکن سراج صاحب بڑا ہی کھٹا آم ہوتا ہے وہ. کیا آپ نے اور کسی آم کی بات کا نہیں لیا؟ میں لے لیتا ہوں نام. تھوڑا سا زبان میٹھی ہے. بات کیا تھا حمایت بہت میٹھا ہے، مطلب اتنی مٹھاس بھی اچھی نہیں ہے. خصوصاً شکر والوں کے لیے. ہاں ہاں، ارے باپ خطرناک ہے وہ. لیکن یہاں ایک آم ہے جو مجھے حیرت ہے کہ وہ آم رتنا گیری کا آم، اور ہمارے کیمپس میں کیسے، وہ ہے الفانسو، اس کو آپس کہتے ہیں یہاں پر. وہ ہے، لیکن میں زیادہ ہوتا نہیں ہے، 15 16 18 ہوتا ہے، اسی میں سے جس کی قسمت میں پہنچ جائے. لیکن ہے بڑا خوشبودار. تو میں آم کے بارے میں بہت کچھ بات کر سکتا ہوں، کہیے تو میں 1 آدھ گھنٹہ آم پر لیکچر دے دوں. لیکن جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں کلاس روم کی بات کر رہے تھے، بہت ہی خوبصورت. all of us definitely share these notions, well-established notions. There are many more things we learn through our own experiences. There are many tutored by a tutor. There are many we learn through various means and ways. One is environment. Environment in which you live. That environment is important. مقصد پہ آؤں تو یہ کہوں کہ why MANUU is different from Hyderabad Central University? Well, because of MANUU's environment. What Hyderabad Central University is teaching, maybe subject 1, discipline 1, topic 1, but yes, methodology may be different. Perception may be different. میں بچپن میں، اب کسی نے دے دی تھی کوئی پنکج ونکج کر کے گاڑی، ایک ڈائری چھوٹی سی تھی، اتنی بڑی ڈائری تھی، اور میں اس کو بہت بہت اپنا عزیز رکھتا تھا دل سے، لیکن خوب گوج گاج کرتا تھا. یہ میرے 7-8 سال پہلے کہ جب میں رہا ہوں گا تب کی بات ہے. اس میں میں نے ایک میپ بنایا تھا، ورلڈ کا میپ. آج مجھے اس میپ کو دیکھتے ہوئے اتنی شرمندگی ہوتی ہے، لیکن میں یہ نہیں سوچتا کہ میں 7 برس میں نے یہ بنایا تھا. اس سے کہ آسٹریلیا کو میں نے بالکل انڈیا کے پڑوس میں دکھا دیا تھا. وہاں جہاں بنگلہ دیش ہے وہاں آسٹریلیا. امریکہ کو جو امریکہ کو دکھا دیا تھا کہ بیچ میں گنگا ہے، ادھر امریکہ ہے. اور یہ سب کریکشنز جو ہیں کیسے آئے؟ ایکسپیرینس سے آئے. اکثر یہ بھی ہم سوچتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا دنیا گول ہے. گول ہے؟ گول نہیں ہے، گول کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ہمارے دیکھنے کا انداز ہے، پیمائش کا انداز ہے. آپ جب پلین میں بیٹھیے اور آپ کے سامنے رہتا ہے وہ جو فزیکل میپ ہوتا ہے، جیسے جیسے آپ گزرتے جاتے ہیں وہ آتا ہے، تو آپ کو زونز کو کراس کرنا ہوتا ہے. اب ایسا نہیں کہ یہاں سے اڑیے دلی ایئرپورٹ سے جائیے یا حیدرآباد ایئرپورٹ سے اتریے تو سیدھے جا کے امریکہ پہنچ جائیں گے. اس کے زونز بنے ہیں، اور ان زونز کی جو لیئرز ہیں ان کو کراس کرنا پڑتا ہے. تو کبھی کبھی آپ جا کے اب دیکھیں نا، اسی حساب سے ہمارا پوری کاسمولوجی بھی ہے. ہم یہاں سے جائیں گے تو ایسے جانے کے بعد پھر ایک جگہ جا کے ایسے، پھر ایسے اتر کے زون چینج کریں گے تب جائیں گے. اسی لیے وایا فرینکفرٹ
वाया लंदन इधर से जाएंगे, उधर से जाएंगे, वाया जापान, वाया कोरिया, ये रुख है। ईस्ट कोस्ट जाना हो या अमेरिका के वेस्ट कोस्ट जाना हो, दोनों तरफ से जा सकते हैं। What is happening? This is because of what we have experienced. We get to know so many things. इसीलिए कभी कभी समझाना होता था, लोग कहते थे ना, शायरों ने बहुत कहा, ये कहा कि मशरिक से मगरिब की तरफ एक दिन में जाया जा सकता है। देखिए ये शायर कह रहा है, मशरिक से मगरिब तक एक दिन में जाया जा सकता है। कैसे जाया जा सकता है? उसी तरह से जैसे सूरज मशरिक से निकलता है मगरिब में डूबता है, एक दिन में हम भी जा सकते हैं मशरिक से मगरिब तक। ये बात शायरी में अच्छी लगती है, मगर साइंटिफिकली गलत है, इसलिए कि हम अपने को मूव करवा रहे हैं। हम अपने मूवमेंट में, मिसाल के तौर पर हम कहें कि दिल्ली से हैदराबाद एक दिन में जाया जा सकता है, चलिए हवाई जहाज में बैठ जाइए, आ जाएंगे आप। तो आप कह देंगे कि नॉर्थ से साउथ में एक दिन में जाया जा सकता है, लेकिन जब हम हैदराबाद पहुंच जाएंगे तो हमारा भी तो कोई साउथ होगा, समझ रहे हैं? हैदराबाद का भी तो कोई साउथ है। तो ये बात जो है वो शायरी और उसके अंदर इमेजिनेशंस में अच्छी लगती है, मगर हकीकतन इसको हम नहीं मान सकते कि जाया जा सकता है। लोग कहते हैं सूरज जा रहा है, सूरज जा ही नहीं रहा, सूरज तो स्टैटिक है, खड़ा है एक जगह पर। वो तो जमीन का है ना, चाहे वो रोटेशन हो या रिवॉल्विंग हो, दोनों कंडीशंस हैं उसमें होता है। सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, एनीवे ये सब तो बहुत आप जानते हैं, बहुत तो बड़े तेज लोग हैं। तो मैंने देखा आपके जो बनाया आपने अपने वहाँ जो प्रैक्टिकल है ना, वो गए थे ना, मुझे देखा, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। अच्छा, मुझे अच्छा लगा कि इतनी साइंटिफिक नॉलेज आप लोगों को है इस तरह की। लेकिन जो एनवायरनमेंट से आदमी सीखता है, अपने आप सीखता है, वो बहुत मुफीद है। जहां इस यूनिवर्सिटी में आके मैं जानता हूं बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो गांव देहात से भी आए हुए हैं, कुछ कस्बों से आए हुए हैं, कुछ शहरों से आए हुए हैं, कुछ शहर नुमा शहरों से आए हुए हैं, है नहीं शहर लेकिन नाम है उनका शहर। कुछ बहुत ही ऐसे इलाकों से आए हुए हैं कि जहां मदारिस नहीं है, जहां उनको पढ़ने के लिए 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है। ऐसे भी हैं जहां उनके वालिदैन ने पढ़ाई नहीं की, पहली बार उनको पढ़ना पड़ रहा है, मदरसे जाना पड़ रहा है। जो घर में है उनको हसरत है कि हमें कोई पढ़ा दे। वो यहां जब कैंपस में आए हैं, मौका मिला और कैंपस में आए, तो अब कैंपस में एक दुनिया दूसरी सी बनने लगी। ये दुनिया जो बन रही है, इसके अंदर मुशाहदात भी हैं, तजर्बात भी हैं, इसके अंदर किताबें भी हैं, इसमें क्लासरूम भी है, इसमें प्रैक्टिकल रूम भी है, इसमें कलम भी है, कागज भी है, कंप्यूटर भी है, इसमें मोबाइल भी है। कल ही बात हो रही थी कि हम कैसे पता लगाएं कि हम सही चीज को परसीव कर रहे हैं और सही चीज समझने के बाद रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके लिए टूल्स बनाए गए, जर्नलिज्म के अंदर टूल्स बनाए गए, करेक्ट इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग, मिसरिप्रेजेंटेशंस, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, देख रहे हैं ना आप कैसे कैसी इंफॉर्मेशन। कभी कभी व्हाट्सएप का पर आ जाता है कि फला का इंतकाल हो गया, वो बेचारा उसको लिखना पड़ता है, नहीं नहीं भाई मैं जिंदा हूं। और जितने सेलिब्रिटी हैं सब कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पर मरे हैं। जितने टॉप क्लास के सेलिब्रिटी हैं उनका जनाजा निकला। आप सोच रहे हैं ये आप कैसे क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? सो दीज थिंग्स आर टू बी
एनालाइज्ड प्रॉपरली। यू नो, मैं आज भी आपसे कहता हूँ कि हमारे जो लेट फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ऑनरेबल ये साइंटिस्ट कलाम साहब, भाई क्या साइंटिस्ट था। 20 साल पहले उन्होंने कहा था कि द एज ऑफ इंफॉर्मेशन इज ओवर, नाउ वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड into the age of analysis. Do the analysis. You are now in such a place where just don't get carried away by information. Information मिली और भागी, वो बड़ा है तो बड़ा सटीक, लेकिन थोड़ा अल्फाज अच्छे नहीं है उसके। अब कौआ खुद ही अच्छा नहीं है, बदसूरत चीज है। कौआ कान लेके उड़ गया और आप कौए के पीछे भागे जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे पास कान है कि नहीं है ना। तो कानों ये देखना कि क्या है क्या नहीं है। क्लासरूम इज ऑल्सो अ वंडरफुल प्लेस। लेट मी टेल यू दैट माय बेस्ट टीचर, सिराज साहब, माय बेस्ट टीचर, okay, there are respected teachers, you see. Day before yesterday, one of my teachers died in Professor Mahmood Alam, you see. 100 tributes to this man, in fact. He was basically a good teacher, a translator, and who has taught me. I learned so many things from him. There are many teachers, in fact. Some of them still alive, some of them no more. But the best teacher, remember, best teacher is a book. Best teacher is not your internet services. Remember, always. वहां से कट पेस्ट हो सकता है, बुक को पढ़ना पड़ेगा शुरू से आखिर तक, तब मटेरियल मिलेगा बुक से। And if you are a good reader, you might become a good researcher, might become a good person to analyze things in proper perspective. My humble request to you that please don't give up this habit. Wherever you are, keep a book with you. It will help you. ट्रेन में बैठे हो, 2 किताबें रख लो अगर लंबा रास्ता है तो। नॉवल भी पढ़ोगे। यू नो, मैंने जेम्स हैडली चेस बाद में पढ़ा। पहले मैंने इब्ने सफी की नॉवेलें पढ़ी और मुझे इब्ने सफी ने उर्दू जबान में बहुत मदद की है उस जबान को सीखने के लिए। क्या मजाक! देखिए, कोई भी जबान, उसका टेस्ट उस वक्त आता है जब उसके अंदर अच्छे जुमले हों और आपको अकेले में हंसा दें, अकेले में रुला दें। ये है जो कैफियत को आपकी बना दें, वो है किताबें। ऐसी किताबें होती हैं। सिर्फ जरूरी नहीं कि वो आप ट्रेजेडीज को पढ़ें या कॉमेडीज को पढ़ें उससे बने आपको, या आप जाके देखें जुरासिक पार्क। ये किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, न जाने क्या क्या। और मेरी एक आदत ये कि मैं फौरन जो किताब मेरे सामने आती है, मैं उसके शुरू के औराक को ऐसे देख लेता हूँ। तालीम एक ऐसा अमल है जो फर्द की सलाहियतों व काबिलियतों को फरोग देता है और मौजूदा तालीमी निज़ाम का अहम मकसद फर्द वाहिद में तमाम खूबियों को एक मुतवाज़िन तरीके से तरक्की देना है। क्या खूबसूरत उर्दू लिखी है, तुम्ही ने लिखी है। एक ताली बजाओ इनके लिए। This is the book. You see, go and read. यही है। And this is your property. अब तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है ये। This is the property of a reader. इसलिए इसका क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। If you have written something out of way, or maybe in a different manner, in a different way, then someone else thinking in different manner, different way can criticize you.
आप किसी रुख पर लिखने के लिए हैं, दूसरा आदमी उस पर जाने के लिए तैयार नहीं, वो दूसरे रुख से उसको देखना चाहता है। बट आई एम श्योर दैट दिस विल कंटिन्यू, दिस यूनिवर्सिटी विल कंटिन्यू। You are here for a set period. You'll go back. हर चीज माशियात से जुड़ी है। सर्विस में आ गए, फैमिली आगे बढ़ गई, मकान, देखभाल, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, मगर एक जिम्मेदारी आपकी होगी, वो होगी कि इन चीजों को आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें, और मुझे उम्मीद है कि आप ये काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, डूब भी गया, रह के मुझको पढ़ेंगे वर्ख वर्ख, मैं तजुर्बात के वह सबक छोड़ जाऊंगा। ये थे शेखुल जामिया जो अपनी सदारती खुतबे से हमें नवाज रहे थे। इसके बाद आखिरी बारी आती है रस्म शुक्रिया की अदा करने के लिए। इसके लिए मैं डॉक्टर नजमा बेगम को दावत देता हूँ कि वो रस्म शुक्रिया को अदा करें। Assalamu alaikum. Good evening, all of you. I would like to take a moment to express my sincere gratitude to all of you for attending this extension lecture and making it effective. I thank Honorable Vice Chancellor for gracing the occasion and sharing his experience. I also thank the chief guest for giving an excellent lecture on how to do hands-on experiences for the students. As we all know, I hear, I forget. I see, I remember. But I do, I understand. This concept was clearly explained with number of examples. So the takeaway from the extension lecture was to do experiential learning. As a teacher, we must provide experiential learning to the students. I also thank Register Sir for sparing his valuable time with us. And Professor Shahin Sheikh Madam also graced the occasion. I am very thankful to you. Once again, thanks all the students for joining the session. And I also thank IMC for cooperating for us. For change of menu also, there was a problem, technical problem in DD, and we have shifted here. And for nice cooperation, I thank all of you. I also thank all the non-teaching staff for doing best arrangement for us. And I also thank the organizing committee to do the complete overall session of this one in an effective manner. I thank one and all. Sorry, sir. I thank Professor Mohammed Siddiqui sir for giving us and HOD sir also for giving us an opportunity to conduct an extension lecture on this. Thank you, sir. आखिर में मैं IMC से गुजारिश करता हूं कि वो नेशनल एंथम के लिए पेश करें। तलबा से गुजारिश है कि खड़े हों। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे
की इजाज़त के साथ प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान करता हूँ। हमारे जो मेहमान आए हैं शहर के मुख्तलिफ़ गोशों से और असातिज़ा इकराम और हमारे अज़ीज़ वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब OSD1 और हमारे DD का स्टाफ, CPDM2 का स्टाफ और हमारे जो स्टाफ हैं वो शोबे तालीमी तरबियत के कमेटी रूम में तशरीफ़ लेते हैं।